See, there are only two sources of organic content on this planet and in this universe. There are only two sources: plant life and animal life. There is simply nothing else. Nowhere in the universe is there any organic content other than plant life and animal life. Today, you look at the farms on the planet. Is there any plant life or is there any animal life on it? हमारे मेयर का जो मणियारा रास है उसके लिए ये लड़के आए पोरबंदर से, इनको भी इनविटेशन है और ये जाम साहब के और सदगुरु के सामने परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे हम भी होंगे तो ज़रूर दिखाएंगे अगर चांस मिला तो इनकी परफॉर्मेंस। और हमारा जो मणियारो है मेयर का वो वर्ल्ड फेमस है ही, बहुत बार आप हमारे वीडियो में देखते हो और ये लड़के वो परफॉर्म करने वाले हैं। पे ये देख के अच्छा लगा। निकलने वाले हैं और देखे हमने उनको थोड़े से, अभी शाम को बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग। अभी पानी पीना है।
गाड़ियाँ आई है। बहुत सारे लोग किड्स और स्टूडेंट्स बहुत धूप भी है। यहाँ पे वेट कर जैसे रहे हैं। हम बहुत यूज्ड धूप टू है 35, 36, 40 तक। लेकिन इस भीड़ लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ धक्का बहुत मुक्की थी हो रही थी, धक्के और मार रहे धक्का थे मुक्की भी हो रही थी क्योंकि इतने बड़े पर्सनालिटी है सदगुरु की। सब लोगों को। लेकिन अभी थोड़ी सी इवनिंग की इवेंट है वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है। फेस टू फेस इसमें मजा इंटरेक्शन आएगा। होगा हम लोगों का भी, क्योंकि हम स्पेशल इन्विटेशन है तो शाम को करेंगे वो। अभी धूप भी बहुत है, भूख भी लगी है। अभी थोड़ी सी झलक मिली, लेकिन वो देख के भी अच्छा लगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा शांति से एक बार देखें, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 मिनट देखा और धक्का मुक्की हो रही थी। अभी मुझे तो हेडेक हो रहा है। क्योंकि तुम्हें मैंने बोला था कि थोड़ा सा करके रहने दो, लेकिन तुमने फिर नहीं, वो 1 मिनट ऐसा लग रहा है कि सामने है तो थोड़ा सा देख लेते, लेकिन जैसे ही देखने जाते नहीं, शाम को है हम आराम से कर सकते हैं बैठ के इंटरेक्शन, उसमें अच्छा रहेगा। अच्छा हुआ ओम नहीं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप और धक्का मुक्की को हिंदी में क्या बोलते हैं? धक्का मुक्की धक्का मुक्की बोलते और वो होती ही होती है। और गुजराती में धक्का मुक्का बोलते हैं हम। अब हिंदी में भी धक्का मुक्का है। हिंदी में भी धक्का मुक्की ही है। धक्का मुक्की हिंदी में फीमेल वर्जन हो गया वैसे। अभी सदगुरु जी वहाँ पे कुछ बोल रहे थे, लेकिन हम अभी गाड़ी में आ गए क्योंकि बहुत भीड़ है और हम इतने दौड़ भी नहीं सकते। अभी बहुत भीड़ है और हमारी गाड़ी है यहाँ पे, तो अभी गाड़ी में जाएंगे। अभी यहाँ से बाइक रैली होगी या नहीं, थोड़ी वहाँ तक बाइक रैली थी, वहाँ से हाँ बैक टू होटल। भूख लगी है मुझे तो बहुत। अभी भूख लगी है ना बहुत ज़्यादा। इसी आसन में खाना चाहिए। चेयर पे भी ऐसे। और आसन ये होना चाहिए हमारे शास्त्रों के अनुसार। हमारे पैर ऐसे पलोटी बोलते हैं, हम इसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता। पलाटी बोलते, पलाटी गुलाटी नहीं, बोलते पता पलाटी नहीं। बोलते। लेकिन इसी आसन में खाना चाहिए और खास करके ज़मीन पर और मिट्टी पर खेत में बैठ के खाना पूरा हजम हो जाता है। तो पनीर है, यहाँ पे पापड़ है, यहाँ पे मसाला है। तो पापड़ में मसाला या मसाला में पापड़ कुछ ऐड करना। उसके नीचे होगी रोटी, यहाँ रोटी और इसमें कुछ होगा पनीर। पनीर का चीज़ें है बहुत ज़्यादा। पनीर चिली ड्राई है। ये पहले खाना खाते हैं। भूख लगी अभी बहुत ज़्यादा। अभी हम जल्दी रेडी होके वापस निकले। और अभी जा रहे हैं प्रताप विलास पैलेस, जो बापू का घर है, हिज हाइनेस जामसाहेब बापू का। फुल अभी शांति से सदगुरु जी को हमें मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और फिर इवनिंग को निकल जाएंगे वापस घर। तो अब भी देखना हमारे साथ, अभी जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। एंड सेव सोइल। सेव सोइल, हाँ, क्योंकि सोइल में स्पेशली फार्मर्स के लिए हम बहुत सारी फसल उगाते हैं हर साल, तो फिर उसके लिए कुछ वापस सोइल को देना भी पड़ता है ताकि वो वापस अच्छी फसल हम ले पाए, प्रोडक्टिविटी ना कम हो। हाँ, और वो हेल्दी रहे सोइल भी, क्योंकि फिर ऐसे ही हम कुछ देंगे नहीं और फसल लेते रहेंगे। 3 अभी हम ले रहे फार्मर्स, तो क्या होगा कि फिर एक दिन सोइल रेत जैसा काम करेगी। सोइल का कुछ वो काम नहीं रहेगा। उसको नुकसान 3 फसल से नहीं होता, उसको नुकसान होता है केमिकल वाली जो दवाएं जो हम यूज करते हैं, जो फर्टिलाइजर केमिकल वाले जो यूज करते हैं, यूरिया डीएपी जो भी है, क्योंकि ज़मीन के दोस्त भी मर जाते हैं इसकी वजह से, जो ज़मीन को हेल्दी बनाते हैं, जैसे अड़सिया और बहुत सारे और कीटाणु जो होते हैं सोइल फ्रेंडली वो। और ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर पे लगाए, जिसकी वजह हम से खुद लगाने वाले हैं। हाँ। सुन, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एटलीस्ट ना लगाए तो जो है उसको काटे ना। हाँ। तो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हम लोगों की। कार्ड सिस्टम रखी है इन्होंने और कार्ड है जिनके पास उनको ही आने दे रहे, इनविटेशन वाले ही लोग हैं। अब देखते हैं अंदर क्या है। भीड़ तो बहुत होगी, लोग बहुत है। पैलेस देखते हैं ना। हाँ, पैलेस तो है ही खूबसूरत।
काम चल रहा है, देखो डेकोरेशन। गोपनाथ आ गई। ये सारे डूंगर। ये प्रताप विलास पैलेस, पहली बार इन सब लोगों को एंट्री मिली है और वो भी पास सिस्टम है, बहुत जगह सिक्योरिटी चेक हो रहा है, उसके बाद ये एंट्री है। और खूबसूरत पैलेस हमेशा ही एज ए यूजुअल पैलेसेस हमेशा ही खूबसूरत रहे हैं पुराने राजाओं के। तो अभी हम आ गए हैं और सदगुरु भी आ गए हैं। Namaskaram. Thank you for having me here in Jamnagar. And Jamnagar has a history of extreme compassion. We all know about how when the rest of the world rejected the Polish children during the World War II, it was the King of Jamnagar, Maharaja of Jamnagar, who welcomed them, which was an extraordinary act of compassion for those days when the British… So, people have not given a mandate. Tell me in which country have 60% of the adult population ever stood up and expressed a long-term concern for their nation, long-term concern for their children? Tell me in which country? Not a single country. They are only asking for 1% tax rebate. They are asking for this and that, they're getting those things. So this is a time we as a generation of people have to express this, that we are concerned about the future of this nation. We are concerned about the future of our children, because this is not a joke, this is not one more thing. This is just not one more thing, you must know this. On an average, 27,000 species of organisms are going extinct per year, every year. 27,000 species, yes, you heard it right, it is species, not organisms. At this rate, in somewhere between 25 to 40 years, we will come to a place where even if we want to revive the soil, we will not be able to revive the soil, because that much biodiversity loss would have happened. Right now it is sliding like this. This slide will not remain a slide. At some point it will tumble down. Before it tumbles, we must push it up, otherwise we will be a very regretful generation. This is not a doomsday prediction. Every responsible scientist in the world is clearly saying by 2045 we will be producing 40% less food and our populations will be 9.2 billion people. And that's not a joke. That's not a world you want to live in. That's definitely not a world that you want to leave your children in. So, one important thing that we're pushing for is to separate soil from other issues. See, there is climate change, there is global warming, there are so many issues like this. They are complex issues. I'm not saying they're not important, they're all very important. There is fertilizer usage, there is pesticide usage, there is many things. But it's important we separate soil from all these issues so that it is handled as a single point agenda. Otherwise, we will go on doing conferences for another 20 years when it's too late. It's very important we act now. We have convinced 74 nations till now to act now. They have signed up for the Save Soil movement. India definitely will go that way. So what is it that we are asking for? This is very simple. I want all of you media people to understand this, not just report me. I want you to understand this because this is crucial for our life. See, there are only two sources of organic content on this planet and in this universe. There are only two sources: plant life and animal life. There is simply nothing else. Nowhere in the universe is there any organic content other than plant life and animal life. Today, you look at the farms on the planet. Is there any plant life or is there any animal life on it? So we have survived like this for 40 to 50 years.
Now the organic content in India has dropped to 0.68%. When the minimum to call soil as soil is 3%, we are at 0.68%. That means we are on the verge of desertification. That's where we are. The only way the farmer is producing food for you is through throw more fertilizer and somehow get the crop out of it. People will say use less fertilizer. If he uses less fertilizer, there will be no food, we will starve. We have to raise the organic content, we have to make the soil rich. I'm asking you, is it rocket science? Is it rocket science that if you want to grow good food, the soil should be rich? Is it something that I discovered? I'm asking you. Hello? Forgotten this in the last 40 to 45 years, and we have caused this damage. To just tell you this, not in a single nation there is a minimum 3% organic content anywhere in the world. The highest in the world is Northern Europe, 1.48%. I'm sorry. Southern Europe is 1.1%. United States is 1.25%. Africa is 0.3%. India is 0.68%. In this 62% of India's land is considered degraded already, 62%. Why has this happened? Well, in the Ganga basin, we have removed 92% of the tree cover, and all the cows are loitering in the highways, not in the farms. In Kaveri basin, we have removed 84% of the tree cover, and cows are all going to the slaughterhouse in southern India. Without animals and without plant life, you cannot farm. You just cannot farm. Right now during the UP election, everybody was talking about this big problem that we have 600 million bovine animals. What to do with them? In a country where 62% of the population are farmers, are cows a problem? I'm asking you. No. Are cows a problem when 62% is in farming? Bovine animals are a boon. If they disappear in the next 10-15 years' time, then what are you going to do? Where will you get the organic content, I'm asking. So it's time we do this, there are ways to do it. For 193 nations, we have prepared exclusive documents, handbooks for making policy. It's taken over 2 years with top scientists. We have prepared this and we have given this to all the nations across the country, across the world. And we have written to 730 political parties in the world that soil and soil ecology must become a part of every election manifesto. It has to become. If this has to become, people have to raise their voice. Right now, this movement is about raising the voice of the people, 3 to 4 billion people. Fortunately, from the 21st of March, since we started the journey in London, 2.3 billion people have spoken about soil, but we need 4 billion people. Please make it happen. Many great beings have come in this world. When they spoke, hardly 10 people could hear them. I was at the Sabarmati ashram, and I was very interested in the Dandi march, and people who were there, I asked them, how many people walked with Mahatma? What do you think, Gujaratis, do you know what's the number? Everybody would think it's thousands of people, isn't it? 72 people. 72 people walked with him. With 72 people, he made such a big movement, all right? But today, you can activate 7 billion people. That's the power that you have. Don't go on saying, what can I do, what can I do? It's time you raise your voice and keep it up for some time till the policies happen. The policies must happen like this. See, in this town, there are some urban laws that if you want to build a house or a building, if you have 10,000 square feet, you cannot build 10,000 square feet of building. They'll allow you to build 6, 7, 8,000 maybe, whatever it is. But if you have 100 acres of land, you can plow every inch of it, turn it into a desert in 10-15 years' time. Nobody will ask you why. I'm saying these laws must change. If you hold agricultural land, minimum 3% organic content should be there. It should be incentive-based, of course. There is a whole plan as to how it can be done. I will not go into the detail of the plan, but it should be incentive-based, but there must be a law. If you hold agricultural lands, minimum 3% organic content should be there.
because soil is not our property. Soil has come to us from previous generations. We must pass it on as living soil for future generations. But what's happened is, in 85% of the nations, still soil is being treated as an inert substance that you can fix by adding a chemical or taking away a chemical. This is the largest living system in the universe, but we are treating it as an inert substance. In this country, we refer to it as our mother. So were we talking about an inert mother or were we talking about a living mother? It is a living mother. It is the mother of our mothers. But today we've brought it down to its knees in such a way, we are first time in the history of the world, we are talking about soil extinction. This is the first time. Let me go, let's make you win. हम तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम निकल रहे क्योंकि हमने सदगुरु से मिल लिया वहाँ पे। क्लोजली मतलब बात तो नहीं हुई क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था। हुआ क्या कि जो आफ्टरनून की इवेंट थी उसमें लेट हो गए, और लेट होने का कारण था पानी की भर्ती ओट से पूरा हुआ काम, क्योंकि जब उनको बोट से उतरना था तो अगर भर्ती होती तभी वो चैनल पर उतर सकते थे, तो उसमें 2 घंटा लेट हुए थे। उसके बाद अभी भी लेट है, अभी वो रोड शो के लिए गए हैं थोड़ा सा, उसके बाद वो वापस आएंगे। लेकिन अभी हम वेट नहीं कर रहे, वो निकल जा रहे क्योंकि थके हुए और घर भी पहुँचना है, तो फाइनल भी देखना है। सारा हमारा काम होने के बाद मम्मी और बेबी को लगी है भूख, पीना है कुछ जूस, और सबसे बेस्ट है फ्रूट जूस, तो पी रहे हैं। उसके बाद अभी निकलेंगे। सदगुरु को मिल लिए बहुत क्लोजली, और तो उन्होंने जो बोला वो हमने सुना, और उन्होंने एग्जैक्टली वो बोला जो अभी हम कर रहे हैं हमारे फार्म में, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और आप लोग भी सुनोगे तो आपको भी पता चलेगा एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला वही हम कर रहे हैं। ये भाई साहब हैं हमारे यूट्यूब फैन भी हैं, और इनकी यहाँ पे दुकान है जामनगर में, नींबू सोडा आइसक्रीम शेक करके, और ये आएंगे और ये खुद भी देखते हैं वीडियो हमारे। तो अभी होटल जाते हैं, वहाँ से सामान पैक करके निकलते हैं। मैंने मिल्क शेक ऑलरेडी पी ली, पीना ट्राई, और हम देखो पीना नहीं पीना है, नहीं एक थोड़ा टेस्ट करूँगा। अभी मेरे से भी नहीं खत्म हो रहा है। अच्छा है, थोड़ा सा ठंडक मिलेगी। अच्छा पी लो। नहीं पीना, मुझे फुल हो गई, थोड़ा सा बाकी का ये फंडा हमेशा सही रहा है। क्या वो खाना या पीना कुछ भी होता है, बोलते मुझे वो खाना, मुझे ये खाना, मुझे वो खाना, मुझे ये खाना, उसके बाद ना वो खा पाती नहीं है, खत्म कर पाती नहीं है। पानी पी लिया पहले इतना ज्यादा। हम रेडी है निकलने के लिए, बाय बाय जामनगर, और अभी हम जा रहे हैं घर वापस, हमारा प्यारा पोरबंदर एंड हमारा घर। सर्वे देखे जाए, क्योंकि मेरी उम्र वैसे 36 साल है और ज़्यादातर फार्मिंग में रहा हूँ, तो अगर पुराने टाइम से आज से 15 साल पहले अगर देखें तो अभी की जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है आसपास में सभी बहुत कम हो गई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो खास करके अभी जो केमिकल लास्ट 5-6 सालों में 10 साल में जो आए हैं यूज़ करने में, उससे आने वाले 5-6 साल या 10 साल में मुझे लग रहा है प्रोडक्टिविटी 20% रह जाएगी, 80% ख़त्म होना है, कुछ भी फसल नहीं होगी। सीधी बात है, अगर फूड ही नहीं हुआ तो लोग तो नहीं रहने वाले। और वही है, सब लोगों को मिलकर करना है, खास करके फार्मर्स को। एटलीस्ट गाय रखो अपने फार्म के लिए, आपके घर के लिए, और गायों को खुला मत करो, गायों के बछड़ों को भी मत खुला करो, क्योंकि उनका खाना अगर आपको लग रहा है कि महंगा पड़ रहा है तो उसी से आपका खाना आना है कहीं ना कहीं। और आपके बच्चों को कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, बहुत सारे बाकी मकान वकान बाय करते हैं, ज़मीन बाय करते हैं, लेकिन वो आप जब उनको देके जा रहे हो तो उसमें कुछ पकना ही नहीं है, कुछ फसल ही नहीं आनी, तो उसका मतलब ही नहीं है। बंजर ज़मीन देके जाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इन शॉर्ट अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए अच्छी ज़मीन छोड़ के जाए, क्योंकि हमें जाना है, हमें हमारे जो बच्चे हैं उनको भी जाना है। जैसे हमारे दादा परदादा आके चले गए वैसे ही हमें भी जाना है, किसी को यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि ये तो एक लाइफ का चक्र है, वो चलता ही रहना है। लेकिन हमारी ये फ़र्ज़ है जब तक हम जिंदा हैं, तो हमारी जो धरती माँ जिसको हम बोलते हैं, और वही कारण है इसको माँ बोलते हैं, क्योंकि ये सभी माँओं की भी यही माँ है, और हम सब इसी से आए हैं, वापस इसी में जाना है। तो बचाएं अपनी ज़मीनें और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, गाय आधारित फार्मिंग करें,
कोशिश करें कि कम केमिकल यूज़ करें।